Hello and welcome to LNT Education. So, good afternoon, friends, dear fellow aspirants. So, Aji, as per the routine, as per the schedule, आज कौन अच्छी इंडियन पॉलिटी मु कहती कि जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन कर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मंडे ट्यूसडे से मानकर रहइबो पॉलिटी वेडनेसडे हिस्ट्री थर्सडे ज्योग्राफी फ्राइडे इकोनॉमिक्स सैटरडे साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट and Sunday GK and current affairs. So as per the schedule, तो हमारा आज प्रथम क्लास लेक्चर नंबर 1, ओके, लेक्चर नंबर 1 इंडियन पॉलिटी. So इंडियन पॉलिटी रो इम्पोर्टेंट टॉपिक that is Indian Constitution. Okay, Indian Constitution. So before going to the topic, I want to clear you something, guys. In every country ruled by some rules and regulations. Every democratic country. Okay. India is the democratic country, you know, guys. Bharat is a democratic country, and India is the largest democratic country in the world. Yes, USA is the first democratic country in the world, whereas India is the largest democratic country in the world. So, our country is ruled by certain rules, certain regulations, certain laws. Okay, among these laws, constitution is the supreme law of the land. Okay, constitution is the supreme law of the land. The constitution होउची आम देशर सबुठु सुप्रीम लॉ, ताठु बड़ लॉ किछि नै. तो देश चालुची गवर्न होउची as per the constitutions, as per the articles, various parts, various schedules that have been written in the constitution. So constitution is the supreme law of the land that enjoys legal and special sanctity. The constitution होउची हम भारत वर्ष सबुठु सुप्रीम लॉ. ओके, जे गोटे सुप्रीम our legal sanctity and it is the faith and aspiration of the people of India. Constitution होउची भारतीय मानकर गोटे faith and aspiration, समस्तଙ୍କର faith और aspiration रहिछि कहा पर हमर constitution ऊपर, because it is the supreme law of the land. Everything is mentioned here. Equality, fraternity, dignity, okay, then liberty, no discrimination, freedom, everything. Fundamental rights also mentioned here. That is very, very needed for a person to live in a society. DPSP is here, fundamental duties are there, various things. Whenever we will discuss about Indian Constitution, then we will study one by one. Okay, बुझा पड़छि, understood? So Indian Constitution आज हम कौन पढ़िबा framing of the Indian Constitution. तो Indian Constitution frame हैला कि परि आर हिस्ट्री कोन अछि. Okay, first गोटे कन्स्टिट्यूशन आइडिया किए दउचंती ना हमरो एमएन रॉय 1934 रे से गोटे कन्स्टिट्यूशन आइडिया दउचंती. ओके, तापरे
आपणकर इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू who became the first prime minister of India after independence से मध्य गोटे प्रपोज करछंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ओके जोटा की फ्रेम करियो हम पई कोन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1938 सो 1934 रे एम एन रॉय गोटे आइडिया दउछंती गोटे कॉन्स्टिट्यूशन लो तापरे इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीए मध्य गोटे प्रपोज करछंती कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे एस्टैब्लिशमेंट हो जे की इंडिया पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करू इन 1938 okay and that proposal of Jawaharlal Nehru was accepted by the British government okay that is called August offer of 1940 तो एई जो ऑफर थिला एई जो प्रपोजल थिला जवाहरलाल नेहरू करो ताको ब्रिटिश गवर्नमेंट कोन करछि ना ए आको एक्सेप्ट करछि 1940 रे अगस्त ताको अगस्त ऑफर बोली को आज ओके तापरे कोन होछि ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई थिंक 1942 रे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स he came to India with this proposal but this proposal was rejected by the Muslim League okay तो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रा फॉर्मेशन पई से नहीं के आछन किए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स but that has been rejected by the Muslim League finally in the year 1946 तो कौन होउछ ना कैबिनेट मिशन प्लान नहीं के आछी कौन गोटे सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्लान नहीं के आछी बाय रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो दीटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आइडिया थिला ताकू रिजेक्ट करी की गोटे सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परि फॉर्मेशन कराबो एस्टैब्लिश कराबो तो सही आइडिया नहीं के आसी कि कैबिनेट मिशन ओके एंड फाइनली as per the cabinet mission okay the constituent assembly was formed on 6th December 1946 that is very important that point to be noted guys okay 6th December 1946 our constituent assembly was established okay okay then the constitution was formed by the Constituent Assembly of India set up on 16th May 1946 in accordance with the cabinet mission under the leadership of Sachibananda Sinha तो initially Sachibananda Sinha हमर कोन होचंती ना Constituent Assembly लो हमर प्रेसिडेंट होचंती तांको लीडरशिप रे हमर कैबिनेट मिशन अंडर रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन होछि जे कि हम पई कोन करछि ना कॉन्स्टिट्यूशन लेखिबा आरंभ करछि कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिया पई गोटे ब्लूप्रिंट तयारी करछि लेटर कोन होछि ना सचिवानंद सिन्हा को बदले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ओके तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रेसिडेंट हिसाब रे इलेक्ट होछंती एंड दुई जन आमर कौन होचंती ना वाइस प्रेसिडेंट होचंती आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए ना जने हेले एचसी मुखर्जी आउले वीटी कृष्णमाचारी एससी मुखर्जी वीटी कृष्णमाचारी तो ये दुई जन आमर कौन होचंती ना वाइस प्रेसिडेंट होचंती अब प्रेसिडेंट के होचंती ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके तो एपर्यंत क्लियर तो ना कोन डाउट रहिस एपर्यंत क्लियर अछि आउथरे कोई भी ओके जस्ट शॉर्ट रे कोइ दोस प्रथम आइडिया एमएन रॉय कर आसी कॉन्स्टिट्यूशन लो 1934 रे तापरे जवाहरलाल नेहरू से मध्य चाहउचंती गुटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम हो एवं इंडिया पे से गुटे कॉन्स्टिट्यूशन लेखा जाओ 1938 रे देन that proposal was accepted by the British government that is known as the August offer 1940 then in 1942 Sir Stafford Cripps okay Cripps mission they came to India but his proposal was rejected by the Muslim League and finally 1946 cabinet mission came to India with a single constituent assembly
by rejecting the idea of a two constituent assembly. And finally, it was formed 6 December 1946. Okay, so constitution was formed by the Constituent Assembly in India on 16th May 1946, accordance with the cabinet mission under the leadership of Sachivayana Sinha. Then finally, after election, Dr. Rajendra Prasad became the president, and two vice presidents were there, S.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. They are elected as the vice president of the Constituent Assembly. Okay. Then B.N. Rao was appointed as the constituent advisor of the assembly on 11 December 1946. तो B.N. Rao को constitution advisor रूप में इलेक्ट करा होची. ओके 11 December 1946. तो फाइनली एबे कोन होना एते जिन से सल्ला परे फाइनली हम टाइम अछि कोन इलेक्शन. ओके फाइनली आसी कोन इलेक्शन. इलेक्शन हम वर्तमान इलेक्शन में को माने पार्टिसिपेट करिए मेनली आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस आउ हेले किए ना एमएल मुस्लिम लीग. ओके आ जो प्रिंसली स्टेट थिले से माने इलेक्टेड नोंटी दे आर कोन से माने इलेक्टेड नोंटी. ओके तो से माने नॉमिनेटेड. ओके तो से माने नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स माने पठेथिले राजवाड़ा रु बा मोर प्रिंसली स्टेट रही छी तो से माने तां कैंडिडेट मानको से कोन करथिले नॉमिनेट करथिले. ओके तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे हमरा टोटल 389 सीट्स रहउची. तो 389 सीट्स रे इलेक्शन होउची एंड 389 सीट्स रु कोन होउची ना 208 सीट रे आईएनसी विन करछि. गोटे थम्स अप मेजॉरिटी मिलुची 208 सीट रे आईएनसी. ओके देन 73 सीट्स ओनली के पाउची 73 सीट्स मात्र पाउची के आपनकर मुस्लिम लीग. Muslim League only got 73 seats and 15 seats were small groups, means independent candidates, and remaining 93 seats were allocated to the princely states. The princely state seat को allocate कराई केमिति ना समाने तांकर कैंडिडेट मानस में नॉमिनेट करछन. तो princely state इलेक्शन है नहीं. तो इलेक्शन केते हेदाला हमरो जो देखियो हमें एक्चुअली 389 minus 93 तो माइनस केते आसियो 6 18 नगले न 296. ओके 296 इलेक्शन है. ओके तो आउट ऑफ 389 सीट्स कोन है हमरो 208 सीट्स आर कैप्चर्ड बाय आईएनसी. ओके व्हाट इज हैपनिंग. Yeah, and yes, Muslim League only got 73 seats, 15 to the smaller groups, and 93 seats were allocated to the princely states. Okay, clear? Dr. B.R. Ambedkar became the chairman of the drafting committee, and he was known as the father of the Indian Constitution. तार बहुत सारा कमिटी रही मेजर कमिटी माइनर कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी तो सब कमिटी पढ़ू. बट डॉक्टर बी आर आंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमिटी जी हूँ मेन कमिटी कहीं ड्राफ्टिंग कमिटी काम हूँ टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू ड्राफ्ट द लॉज रूल्स रेगुलेशंस आर्टिकल्स, ओके शेड्यूल्स पार्ट्स, ओके सब किसी तो ताकू ड्राफ्टिंग करछन किए डॉक्टर बी आर आंबेडकर ताको चेयरमैनशिप रे ताको कमिटी रे 7 जन 8 जन मेंबर रहउचंती 7 मेंबर्स रहउचंती बट ताकर चेयरमैन के रहउचन हमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर. ओके देन इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक 2 year 11 month 18 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ड्राफ्टिंग कमिटी को टोटल 2 year 11 month 18 days लगुची टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करिया पई 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगुची ड्राफ्टिंग कमिटी को. ओके ता पूर्वरु मध्य किछि प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, पार्लियामेंटरी अफेयर्स एटसेट्रा तो सी इमीडिएटली
effective है use. Okay, and finally on the date 26 November 1949 रे हमरो constitution संपूर्ण भाव में लिखा use, but that was not enacted on that day. लागू से दिन होनी, लागू होची 2 मास परे केबे होची ना 26 January 1950 रे होची काई कि ना that day was historic day काई कि ना 1930 January 26 रे आपनकर जो अपन लाहौर सेशन जब हेइथिबो लाहौर सेशन ले जवाहरलाल नेहरू कर प्रेसिडेंसी तांको अध्यक्षता हेइथिबो तो सेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस तो पूर्ण स्वराज से ऑलरेडी डिक्लेयर कर देथिबो मींस इंडिपेंडेंट कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडिया डिक्लेयर करथिबो एवं राबी नदी कोर मध्ये आमे कोन करथिना से सेशन रे हेइतो कोडी पाकिस्तान लो राबी नदी कोर ओके लाहौर रे एवं सेटे मध्ये हमरो नेशनल फ्लैग को मध्ये आमे ऑलरेडी होस्ट कर दी थी ओके तो सेई डे को हिस्टोरी करिया पाई तो हमरो 2 मास ताकू घोंचा जाउछ नहले एमिति 26 नवंबर 1949 रे हमरो कंप्लीट होउची बट तार इनैक्टमेंट के बहुची हमरो लागू के बहुची ना लागू होउची आफ्टर 2 मंथ 26 जनवरी 1950 ओके तो इनिशियली there was a preamble okay तो preamble विषय में डिस्कशन करी preamble is the preface of the Indian constitution ता विषय में केते क्लास आगु जीवो ता विषय डिस्कशन कराम and initially 395 articles are there 22 parts and 8 schedules मन रखियो तो फाइनली 26 नवंबर 1949 रे हमर constitution लेखा सरी होउची preamble ता सहित 395 articles धारा दाव हम कहूछु 395 टा कोन आर्टिकल्स आउ 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स ओके ब्राउज तो जदि बर्तन देखिबा इन करंट सिनेरियो हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो 395 आर्टिकल्स टा बॉडी बर्तन 470 आर्टिकल्स हलानी जोटा 22 टा पार्ट थिला एटा बॉडी की 25 पार्ट्स आउ 8 टा जो शेड्यूल थिला से बॉडी बर्तन 12 टा शेड्यूल है ओके इनिशियली 395 आर्टिकल्स तो बर्तमान एटा बॉडी की 470 आर्टिकल्स 22 पार्ट्स एबा 25 पार्ट्स अगर फास्ट करथला 8 टा शेड्यूल थिला बेटा पर 12 टा शेड्यूल है ओके सो फाइनली दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 okay and that historic day is known as the republic day or constitution day whatever you may say it okay तो 26 जनवरी 1950 से दिन हमर constitution हमर लागू होउची that day is celebrated as the republic day across the country then हमर constituent assembly हमर indian national flag tricolor flag को adopt करछि केबे ना 22nd जुलाई 1947 okay हमर tricolor flag national flag को हमर constituent assembly बा हमर constitution केबे अडॉप्ट करछि 22nd July 1947 and here is a question that flag was designed by पिंगाली वेंकैया तो पिंगाली वेंकैया से डिजाइन करछन हमर कोन नेशनल फ्लैग को and that national flag was adopted by the constituent assembly or constitution on 22nd July 1947 okay तो 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट हैला तो 1946 रु 1949 जनवरी 26 पर्यंत तो एई टाइम को जो गवर्नमेंट थिला से गवर्नमेंट को कहा जाए इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाए तो इंटरिम गवर्नमेंट रे हम देखिया बर्तमान तार सु कोन सु पोर्टफोलियो रहउची ओके फ्रॉम 1946 रु 1949 जनवरी 26 ओके तो एई जो टाइम पीरियड को हमर कोन कहला इंटरिम टाइम पीरियड इंटरिम गवर्नमेंट तो इंटरिम गवर्नमेंट रे कोन सो पोर्टफोलियो देखिबा ओके देखो जवाहरलाल नेहरू से थिले काउंसिल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस
सरदार वल्लभ भाई पटेल डिपार्टमेंट होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सब लिस्ट कहार इंटरिम गवर्नमेंट 1946 रु 1949 ओके से जो इंटरिम पीरियड को देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे डॉक्टर जॉन माथाई कौन थे इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज ओके देन जगजीवन राम लेबर सरदार बलदेव सिंह डिफेंस CH भाभा वर्क्स माइंस एंड पावर लियाकत अली खान फाइनेंस अब्दुल रब निस्ता पोस्ट एंड एयर असफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट C राजगोपालचारी एडुकेशन एंड आर्ट्स ओके देन चंद्रीगर कॉमर्स देन खान गफर अली खान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जोगिंदर नाथ मंडल लॉ तो यही माने सब ए डिपार्टमेंट को सब अंडर सब रहउछन ओके नोट कौन अच्छी द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वे द मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओके ए जो इंटरिम गवर्नमेंट रो जो मेंबर्स माने रहउछंती तो से माने से समय जो वाइसरॉय रहउछंती तो तांको एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंडर से काम करछन ओके एंड वाइसरॉय इज द हेड ऑफ द काउंसिल से काउंसिल हेड के जो हमरो वाइस रहउछन ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आई थिंक जदि किसी कार डाउट रहे निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो तो या भितर जो जो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा मुझे डिस्कशन करदेली कि यही पार्ट्स को इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन आसी पारे एग्जाम रे भल भाव में टिके ध्यान दबो सो आज ये नेक्स्ट क्लास काली पुणी यार लेक्चर नंबर 2 नहीं आसबि कारण सोमवार एवं मंगलवार जेहेतु इंडियन पॉलिटी अच्छी तो आज इंडियन पॉलिटी लेक्चर 1 गला कल लेक्चर 2 रे नेक्स्ट आउट पार्ट नहीं आसबि तो से पर्यंत रोची आसंता काली पुणी नेक्स्ट क्लास देखा सो लाइक करने को भूलिबनी शेयर करिवे एंड सब्सक्राइब करिवे एवं आपन नियर एंड डियर्स फ्रेंड्स मानक मध्य सब्सक्राइब करिया पे कहिबे तामु शेयर करिवे ओके सो आज बेति की जय हिंद जय जगन्नाथ।